So we'll start with next chapter, which is work, energy, and power. We have already done these questions, some of the questions from work, energy, power, and it's the same topic that you did in your O levels. So same concept. The only difference will be that we will be having a little more difficult questions or require more understanding of the concept. The question won't be that simple, that like the way we have done in some of the kinematics questions. So first of all, what is work? Definition of work. It is defined as product or sorry, for before that, if you are pushing an object and the object is not moving, in that case, no work is done. You are using your energy, but you are doing no work at all. So work has to be done if the object moves in the direction of the force. If it does not, there is no work done. If you push an object by a force F and the object moves a distance d, then work is said to be done, and it is defined as the product of force and the displacement moved in the direction of the force. The formula becomes F into S, force into displacement in the direction of the force, and it is a scalar quantity. It's not a vector. The units are joule. And 1 joule of work is done if a force of 1 Newton moves the object by a distance 1 meter in the direction of the force. So you must know the units definition of work and the definition of joule as well. Now this is the case if the object, movement and force are parallel to each other. What if the force and displacement are not parallel to each other? What will we do now? For example, if you have an object and you are applying a force, but this force is at a certain angle to the displacement. Let us assume the displacement is theta. In this case, work will not be F into S. You have to find the component of force in the direction of displacement F cos theta. In this case, where work will be F cos theta into S, because it will be in the direction of the force now. And only that component will be considered which is in the direction of displacement. In this case, if theta is equal to 0 degrees, जैसे कि हमारा पहला केस था, तो work will be F into S. On the other hand, if theta is equal to 90 degrees, as if the object is moving in this direction, but the force is upwards. So your case, Yes, sir. case number 2, in this case, work will be equal to 0. Third case, F and S. S is towards light, force is in the opposite direction. Theta is equal to 180 degrees. This is called work done against resistive forces. Resistive forces is friction or air resistance. Again, this formula is the same. F into S cos theta, it becomes minus Fs, F into S. This is work done against resistive forces. It will be considered negative. It means energy lost against resistive forces. So these are 3 possibilities that may be considered when we are doing work. It can be 0 degrees, it can be 90 degrees, it can be 180 degrees. Whatever is the angle, we'll be using Fs cos theta. So 3 possibilities.
0 degree, 90 degree, and 180 degrees. If it is any other angle, then it will be F cos theta into S. Okay. Next is work done against gravity. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब यह है कि हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, इसे हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी कहते हैं, इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं. फॉर्मूला इज अगेन द सेम, F into D. In this case, the minimum force will be your weight and the distance will be your vertical height. It's vertical height. It is not slant distance. It is vertical height. So my formula becomes mgh. And this is also called gain in potential energy. mgh. Formula for potential energy. Now, what if I move it from A to C? What will be work done against gravity? It will still be mgh. Same work done irrespective of the path taken. So जब भी आपसे कहा जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो आपने वर्टिकल हाइट लेनी है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन जो वर्टिकल हाइट बनती है उसको mg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगी. ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. या नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. यहां मैं सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूं सो दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूला. इट इज हाफ F into E. ये हम वहां पर डिटेल में करेंगे हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला. और अगर हम F की जगह Ke, अगर आपको याद हो ओ लेवल्स में आपने हुक्स लॉ किया था, F इज Ke, F की जगह K रिप्लेस कर दें तो हाफ Ke स्क्वायर बन जाता है. तो वी आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला? ये डेरिवेशन ऐसे पूछता नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square. How we got that? F into S is the work that you have to move the object from 0 speed to v, and let us assume the distance it moves is s with an acceleration a. Work will be F into S. F is equal to MAS. If AS is to be found, we use the formula V square minus U square or 2AS. And from here, AS will be V square minus U square over 2. So replace it in equation number 1. And you get the formula for kinetic energy as half mv square minus U square if it is changing from some value. If it is 0, then straight away it is half mv square. So this is how we derive the formula for kinetic energy. In the previous case, we had drawn the formula for potential energy, mgh. Derivation they don't ask, but you should remember the formula by heart. Simple example. We are moving an object on an inclined plane, applying a force of 30 newtons, and it reaches the top. Vertical height is 3 meters. Weight of the object is 20 newtons. We are applying a force of 30 newtons along the inclined plane. What is the work done by 30 newtons? Force is 30 and the distance moved in the direction of the force will be 5. So my work done by the force of 30 newtons will be F into D. These are things which I have to calculate. The work done by 30 newtons, F into D. 30 into 5 is 150 joules. This much work is done by moving the object along the inclined plane. Work done against gravity, mgh irrespective of the path. H is given to us as 3 meters and the weight of the object is 20 newtons. So we can either move it from the inclined plane or we move it vertically upwards.
Multiply that and you get the work done against gravity as 60 joules. Now observe, when we are moving along the inclined plane, we are doing more work. But when we move it vertically upwards, we are doing less work. Why? Because if you are moving the object along the inclined plane, there is a resistive force acting on the object as well. You have to overcome that. You are wasting some of your work against resistive force. Your net output is just 60 joules. Your input was 150 joules. So you have wasted some energy or work against resistive forces. So how much it is wasted? 150 minus 60 will be your wasted energy because your input was 150. That is what you have done. That's called input. What you have achieved is your output. So if you subtract it, you will get the work done against friction or resistive force. 90 joules. What is the value of friction then? You know that work is equal to F into D. In this case, it is 90 joules. Distance, the object has moved where the friction was taking place was 5 meters. So D will be 5. And from here, 90 divided by 5 will be your force of friction. So can't neglect that. When this asks about efficiency, it is output over input, whether it's energy or power. It is output over input. If it's energy, useful output energy divided by input energy. अगर वो आपको पावर कैलकुलेट करवाता, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर से भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. तो एफिशिएंसी बेसिकली मींस आउटपुट ओवर इनपुट. 60 divided by 150 is your efficiency. 0.4. 0.4 fraction gives you efficiency. But if you want in percentage, multiply it with 100% and you will get the answer in percentage. So this is a basic simple question where you should clarify your concepts. What is the work done by the force? What is the work done against gravity? What is the work done against friction? To keep these things in your mind whenever we are solving any question regarding the energy. Okay. A simple concept. Work done by gas. If we heat a gas cylinder, we have trapped some air or some gas in a cylinder and we heat it. What happens? Pressure increases. And as pressure increases, the gas exerts a force on the piston and this piston moves. As shown here, it has moved a distance dx. So how much work is done by the gas? Formula is same, F into dx. How much force it exerts? In that case, remember, pressure is equal to force over area. So force exerted by the gas will be pressure into area. If you multiply pressure into area into distance, that will give you the value of the work done by the gas in pushing the piston away. Now here, area into distance. Just look at this portion, area into distance. It is the increase in volume. So we can replace area into dx by increase in volume. So my formula becomes pressure into change volume. This will give you the work done by the gas. And change volume means V2 minus V1, final volume minus initial volume. They may ask you dry formula, or they may ask you to identify the formula in multiple choice questions or use the formula in a question itself. Now, if we are given the graphs, volume increases from V to 2V, pressure is constant. So straight away, it is the area under the graph. If it is a straight line, but what if it is a curve?
Still we find the area by using our like in this the second case, we can make it into a trapezium, or we can divide into small portions and add different areas, all the areas underneath the curve, and that will give you the value of the work done by the gas. The derivation of this formula is sometimes asked in the question itself and sometimes in multiple choice questions. What is kinetic Okay, sir. energy? It is the energy possessed by a body. Sorry, what is energy, by the way? It is the ability or capability of an object to do work. If you have energy, you can create a force. It can be used to raise an object, or it can be used to move an object with a certain velocity. If you raise an object, it becomes potential energy. If you give a velocity, it becomes kinetic energy. Again, it is measured in joules. How we define kinetic energy and potential energy? In this case, kinetic energy is energy possessed by a body due to its motion. And the formula is half mv square. What is gravitational potential energy? Energy possessed by a body due to high Gravitational force. against gravitational field, due to पोजिशन और हाइट कह लें आप, बट इसमें ऐड करना है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. इसका फॉर्मूला क्या था? mgh. MGH. Okay, sir. What is elastic potential energy, by the way? Three definitions, very important. Energy possessed by a body due to change of its state or shape or compression or extension. कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. इट इज हाफ F into E. So why is it called elastic? बिकॉज व्हेन हम उसको डी शेप करते हैं, हम स्ट्रिंग को खींचते हैं, तो इट इज इलास्टिक. उसके अंदर एक्सटेंशन आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंशन सम ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इलास्टिक. Okay, sir. अगर आप किसी लकड़ी को बेंड करते हैं और उसको आप जब रिलीज करेंगे, तो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई होती है. ऐसी एनर्जी जो चेंज ऑफ स्टेट या शेप की वजह से किसी बॉडी के अंदर हो, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, बिकॉज इट विल बी ओबेइंग हुक्स लॉ. So these are some of the basic definitions and formulas that you should know. Then we have the concept of law of conservation of energy. O levels में आप पढ़ते थे, energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another. अगर आपको वो definition याद है, well and good. Otherwise, this is the proper definition. The total energy of a closed system remains constant. It can be converted from one form to another. ये भी याद कर सकते हैं, और अगर पहली वाली याद है तो वो भी ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, उसको आपने ऊपर फेंका है, उसके पास either it will be kinetic energy or it will be potential energy. At any point, total energy of the closed system will be constant and can be converted from kinetic to potential. No change total energy. So, total energy does not change. But of course, kinetic energy can change, potential energy can change. और मैं अगर इस इक्वेशन को जरा रीअरेंज कर लूं, ये बन जाएगा डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, and it gives us the logic that gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy. So ये वही concept है KE on top equals to sorry KE on bottom equals to GPE on top. हाँ, अगर there is no other forces acting, closed system की बात कर रहे हैं तब. अदरवाइज अगर वहां पे हम रेजिस्टिव फोर्स की बात करते हैं, ए रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो लॉस इन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी will be equal to loss in kinetic energy and
उसमें से माइनस करेंगे एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आ रही थी वो वर्क डन बाय 30 वाज नॉट इक्वल, तो फिर हमने जो डिफरेंस था उसको वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस के इक्वेट कर दिया था। तो वहां पे रेजिस्टिव फोर्स अगर मौजूद है तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस भी अप्लाई होगा। अगर अदरवाइज आप कहते हैं क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि उसमें एनर्जी उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल। ओके सर। एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। एक बच्चा है 50 का, वो एक स्लाइड पे बैठा हुआ है, ही इज एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर्स। वो स्लाइड से नीचे आता है, बी पे आता है, फिर वो बी से दोबारा राइज करता है, गोस टू अ पॉइंट सी। वो 5 मीटर की हाइट पे है और यहां उन्होंने कह दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। तो इसमें हमने एनर्जी लॉस इग्नोर कर देनी। वो कहता है जी बताइएगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेट अवे, mgh। फिर वो कहता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो दैट शुड बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सो k max शुड बी 7350 एट बी। वही आंसर आ जाएगा। अगर वो कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी, तो हाफ एम बी स्क्वायर को इक्वल कर देंगे 7350 के बराबर, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ v। v को सब्जेक्ट बना लेंगे हम यहां। So this will be the velocity at B because all of the potential energy is converted into kinetic energy. फिर वो कहते हैं what is the potential energy at C? mgh. This is not equal to potential energy at A because it is not at the same height. But energy can neither be created nor be destroyed. तो ये जो A की एनर्जी थी वही कंटिन्यू कर रही है, C पे वो एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी की नहीं बनी। तो व्हाट हैपेंस विद दैट एनर्जी? सर यूज्ड अप हो जाती है जब नो बी से नॉट सी यूज्ड पे अप, मूव नॉट कर रहा यूज्ड होता अप। इसमें हमने कहा है फ्रिक्शन यूज अप क्यों? है। सो इट इज लॉस्ट। Not lost. It will be the kinetic energy at C. जो A और C की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी एट C. So kinetic energy at C will be equal to the difference of the energy at A and C potential energy. इनका डिफरेंस निकाल लें, that will give you the energy at C which is your kinetic energy. तो C पे वो जाके रुकेगा नहीं, वो C पे मूव कर रहा होगा। तो सी पे वो मूव करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड बी होगी, या जो काइनेटिक एनर्जी एट बी थी उसमें से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दें तो जो बचेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास हो। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट अब जब क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता, सिर्फ आपको उसको जरा गौर से पढ़ना पड़ता है कि वो कह क्या रहा है, एंड एनालाइज द क्वेश्चन। डोंट रश। अगर आप रश करेंगे तो सामने लिखी हुई बात आप गलत उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अब देखिए मैं सिंपल एग्जाम्पल करता हूं। वो कहता है जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो 1.6 मीटर की हाइट पे है, वहां से गिर रहा है। तो क्या स्पीड होगी उसकी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? सिंपली जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी बन जाए। mgh will be equal to half mv स्क्वायर, और यहां से mm कट जाएगा तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू gh, एंड फ्रॉम हियर दिस विल बी वेलोसिटी विद व्हिच इट विल बी हिटिंग द ग्राउंड।
अब जरा अब यहां पे देखिए, जब वो राइज कर रहा है सेकेंड टाइम, तो वो सेम हाइट तक नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? और से देखिए क्या कहता है, आफ्टर बाउंसिंग द काइनेटिक एनर्जी द बॉल इज ओनली 90% ऑफ दैट जस्ट बिफोर बाउंसिंग। जो भी एनर्जी थी उसकी 90% रह गई। सो the energy possessed by this object when it rebounds is only 90% of the maximum energy, और maximum energy इसकी mgh से थी, या 90% हाफ एम बी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं आप। सो हमने इसको यूज करके आप एम जी एच टू इज इक्वल टू 0.9 एम जी एच वन कर सकते हैं, या एम जी एच टू इज इक्वल टू 0.9 हाफ एम बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बिकॉज ओनली 90% इज डेप्थ ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैं H2 स्ट्रेट में कैलकुलेट करूंगा, एंड दिस टाइम H2 इज लेस 1.44। हियर एनर्जी इज लॉस्ट, तो डिफरेंस निकालेंगे हम। व्हाट इज द बॉल स्पीड ऑफ द बॉल? अब वो हाइट जो रेस कर रही है वो 1.44 है, तो कितनी लॉस कितनी स्पीड होगी उसकी? पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर। यहां से फिर हम बी निकालेंगे, एच 1.44 निकाल चुके हैं हम, so V comes out to be only 5.3. So it means when it hits the ground, the speed was 5.6. When it is leaving the ground, the speed was only 5.3. Downward speed is negative, upward speed is positive. Change momentum, mv minus mu. Mass of the object was given to you, 0.073. Positive velocity when it is moving upwards, negative velocity when it was moving downwards. Minus multiplies, become plus, and you get the answer as 0.8 upwards. That's the change momentum and direction. अब ये तो ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में चेंज आ गया, तो मोमेंटम के neither decrease nor destroyed, okay, total linear momentum remains constant. तो बॉल का तो मोमेंटम कम हो गया, चेंज आ गया, कहां गया वो? It is gained by the earth in the opposite direction. फ्लोर, अब इस केस में ये बॉल और फ्लोर है, वो एक क्लोज सिस्टम। जितना मोमेंटम बॉल लूज करेगा उतना ही मोमेंटम फ्लोर गेन कर लेगा, एंड मोमेंटम विल बी कंजर्व। ये कॉन्सेप्ट है ऑफ एनर्जी। कल इंशाल्लाह इसको हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा टॉपिक रह गया पावर का, वो भी हम करें, पावर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वो भी हम कल करेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।